Good afternoon friends. गुड आफ्टरनून। कल जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का बजट एनालिसिस है फॉर द ईयर 2020-21, जिसमें उन्होंने 22 के लिए हमारे एग्रीकल्चरल प्लान्स बनाए हैं, पॉलिसी बनी है और उसी की डिटेल्स मैंने आपको कल दिए थे। चैप्टर 1 कल आप लोगों ने देखा था, आज हम उसी का चैप्टर 2 देखेंगे। आप देखिए स्लाइड नंबर 2 पे हम आ गए हैं। यू हैव द स्लाइड्स ऑन योर फोन्स। ओपन हो गया? स्लाइड सेकंड पे आए आप लोग। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कवर होने के लिए, दैट इज जस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना है, क्योंकि द चैप्टर इज आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्कीम्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। मैंने आपसे कल कहा था कि पहले हम इनपुट्स पे आते हैं, देन वी स्टार्ट अवर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आई थिंक मिस हो गया है, हॉर्टिकल्चर, देन एनिमल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी स्कीम्स एंड फिशरीज। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। What was the objective? The objective, okay, what happened, Mr. Samir? The objectives mainly were increasing the product of cereals, pulses, vegetables, foods through area expansion and productivity enhancement in sustainable manner. Rice and wheat, especially green revolution के फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका था। लेटर ईयर्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के उस पोर्शन को आगे यूपी में भी एक्सटेंड किया था और राइस और व्हीट में हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे। जो लेफ्ट आउट्स हो गए दैट वाज सीरियल्स, पल्सेस एंड सब लेफ्ट आउट थे। तो इन पॉलिसीज में ये स्ट्रेस दिया गया कि आप उन पे भी काम करें। एक चीज जो नॉर्मली होती है कि आपने पहले राइस और व्हीट पे ध्यान दिया, बाकी आपके फूड आइटम्स पिछड़ते गए। इस बार की इसमें जो चेंजेस मैंने कहा था, गवर्नमेंट लूप होल्स एंड ब्लॉकेजेस को देखते हुए न्यू पॉलिसीज बना रही है। तो इस बार उन्होंने व्हीट और राइस के साथ में पल्सेस एंड सीरियल्स एंड हॉर्टिकल्चर भी। हॉर्टिकल्चर में स्पेशली म्यूट कर लें हम। Horticulture के अंदर we will study the production of fruits, vegetables, flowers and everything. Next, the promotion of good agricultural practice with respect to plant production strategies and techniques. Third one is improving the productivity of cattle through various schemes and programs. Yesterday also we discussed about the Protection Act for varieties and seeds, varieties of plant, उनके जो आपके इंडिजिनस सीड्स थे उनको कैसे प्रिजर्व करना है। हमने कल पढ़ा था फार्मर्स की कुछ ग्रुप्स के बारे में, नए अवार्ड्स के बारे में देखा था। तो उसी को हम जब प्रोडक्टिविटी के उसमें लेके आएंगे तो कैसे ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फ्रॉम दिस स्लाइड वी आर स्टार्टिंग ऑल द प्रोग्राम्स एंड मिशंस दैट वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट in this 12-year plan and which have the perspectives of 2022 agriculture policy. The first one is National Food Security Mission, launched in 2007 and 8 to increase the production of rice, wheat, pulses. Quantity is mentioned there. It was during the 11th plan. The other objectives were restoring the soil fertility, creating employment opportunities, enhancing farm level economy. To encourage the allied activities in the agricultural sector like poultry and other sericulture and beekeeping, these initiatives were taken. The mission is being continued during the 12th year plan and the target of additional production of 25 million tons of food grain comprising of 10 million tons rice, 8 million tons of wheat and 4 million tons of pulses. These are the targets set for the 12th plan. The next slide shows the objectives of this plan. Again it is the same thing we have discussed earlier. Now, we will go fast for the slide. We have 2 presentations here. We can just look down area coverage under NFSM form 2017-18 onwards.
आपको इसमें दिख रहा है, आपके वो एरिया जो इम्प्रूव एक्सटेंड किए गए, आप देखें पहले 638 डिस्ट्रिक्ट्स 29 स्टेट्स में लिया गया। इस स्कीम को हमने कई सब स्कीम्स में बांटा, राइस, वीट, पल्सेस एंड कोर्स, सबके लिए सेपरेट स्कीम दी। एक स्कीम देने की बजाय सबके एक सेपरेट दी। आगे जाके हम इसके टेक्निक्स भी देखेंगे। 194 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका राइस एनएफएसएम राइस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। लाइकली आप देख लीजिए नीचे 126 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका वीट किया गया। आपके पास पूरा डिटेल है, यू विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरवेंशन इंक्लूडेड अंडर द प्रोग्राम, क्या स्पेशल किया गया, क्या नया ऐड किया गया? ब्रीडर सीड प्रोडक्शन, ये एक स्कीम की तरह इंट्रोड्यूस किया गया पल्स प्रोग्राम में, जिसमें 150 सीड हब्स बनाए गए स्पेशली आईआईपीआर कानपुर के अंडर, जिसका काम था सर्टिफाइड सीड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना और इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो पल्सेस का इंडिया में हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। आपको कल भी मैंने बताया था, अगर आप आईआईपीआर का फुल फॉर्म देखते हैं, इट इज पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पल्सेस पे काम होता है। मैंने कल आपको नाइट्रोफिक्सेशन बाय बैक्टीरिया के बारे में कल बताया था, वो हम लोगों ने एक सर्वे किया था। तो यहाँ आईआईपीआर में जो आपकी तुअर दाल है, अरहर दाल, उस पे बहुत अच्छा एक नया सीड उन लोगों ने उस समय डेवलप किया था देश, और उसी समय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, जस्ट टॉक अबाउट दैट यस्टरडे, कि वहाँ 15-16 लाख के फार्मर्स थे जिनको उस नए दाल के लिए क्या उनका कंडीशन रखनी है, क्या फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, पूरी ट्रेनिंग उनको दी गई थी। इसी आईआईपीआर के अंदर आपका इसमें आपको खुश होना चाहिए कि हमारा कानपुर लीडिंग इंस्टीट्यूट है। कई अदर स्टेट्स में भी इस तरह के उनके सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सप्लाइंग mini kits of pulses and seed varieties free of cost। important thing is free of cost। कल हमने बात किया था कि फार्मर तक ये पहुंचाना ही मुश्किल होता है, तो अब आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? कंडक्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, लेटेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पल्सेस, जो भी अभी मैंने आपसे कहा कि वहाँ ग्रुप था फार्मर्स का ट्रेनिंग लेता हुआ, सेम ऑब्जेक्टिव्स में भी है कि आप उनको डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, हाउ टू यूज दैट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सीड्स। 15% allocation is earmarked for pulses under this scheme, and the government has decided to create a buffer stock of pulses to control the fluctuation of prices। इकोनॉमिक स्टूडेंट होने के नाते we know that whenever the supply is short, the prices goes high। The main thing, if you want to control the price of these food grains, you have to have a buffer stock। तो ये इनका टारगेट रहा है कि हमने बफर स्टॉक कर ली। इसके लिए उन्होंने सीड्स भी इम्प्रूव क्वालिटी दी है। नेक्स्ट आउटकम क्या मिला इस पूरे एफर्ट का? Yes, they achieved the bumper production of price। आपको क्वांटिटी लिखी है, आई एम नॉट वीट, पल्सेस, कोर सेल, सबका टारगेट बम्पर प्रोडक्शन के टाइप हमने अचीव किया। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अचीव्ड वाज increasing, it was about 9.6% increase since previous years। Next slide। Bringing green revolution to eastern India। The main thing कि हमने पहले पंजाब सेक्टर लिया, then उत्तर प्रदेश लिया, then we concentrated on Maharashtra and South region। The wholly neglected region was the northeastern। One thing I want to tell you, the land there is very fertile, the soil is very fertile। उनके पास पॉपुलेशन कम है, लैंड मासेस ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है, वहाँ राइस बहुत अच्छा होता है। हमें ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि ये सेक्टर अभी छोड़ा जा सकता है, तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ जगहों पर आपको पता है वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश में आपको पता है मेघालय में होती है। प्लस वो कैसा रीजन है, पूरा हिली रीजन है, जहाँ पर आपके स्टेयर्स वाली खेती, सीढ़ीदार खेती वगैरह होती है। लेकिन एक टाइम के बाद वहाँ भी फर्टिलिटी लूज होने के पीछे वहाँ लॉगिंग ऑफ वाटर था, बाढ़ का आना, फसलों का बर्बाद हो जाना। ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो बार बार वहाँ पानी की प्रॉब्लम, वहाँ ज्यादा पानी की प्रॉब्लम आती है। तो उस पानी को कैसे यूज करें? आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ये नहीं कहते कि सिर्फ पानी ही चाहिए, तो हम पानी, ज्यादा पानी भी प्रोडक्टिविटी को लॉस करता है। आपको पता है अगर लॉगिंग हो गई वाटर की तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। इन सबको
ध्यान पहले दिया नहीं गया। तो अब जब ये स्कीम चली तो उन्होंने एक पूरी स्कीम को इसको बनाया यहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो स्लाइड कौन सी चल रही है? कैन यू गिव द नंबर? 8 हाँ, ओके ओके। ईस्ट इंडिया में लाने के लिए 2010 एंड 11 में इनिशिएटिव्स ले लिए गए। सब स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक बनाई गई, जिसका मेन काम था टू एड्रेस द कॉन्स्ट्रेंट्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। सारे स्टेट्स हैं। The goal of this scheme was to harness the water potential for enhancing the rice production in East India. It was implemented in identified districts which were not covered under the NFSM's rice scheme earlier and the wheat scheme also. Presently, the scheme is implemented on 60-40 sharing. You know that is central government will provide 60% of fund and 40% will be provided by the state government. Next slide. Objectives of this sub-scheme is to increase the production and productivity of rice, to promote cultivation of rice and fallow areas, crop intensity and to create water harvesting structure, efficient utilization of water potential, to promote post-harvest technology for marketing support. Progress, we have to discuss the progress, that is the more important thing. During the year 2017-18, the amount of 450 crores of Government India share was earmarked against the amount of 237.61 crores that was earlier released. Regular and frequent visit to the fields to monitor implementation. जैसा कल के लेक्चर में था कि monitoring is very important for proper implementation of the scheme. You just implement the scheme and you never look at the drawbacks and the blockages and the leakages. But when you monitor, you look in the petty things and you have the solution for that and the program is well implemented. So this provided for monitoring in the program. The production of rice increased to 45 millions. Next, the National Mission on Oilseeds and Oil Palm. इस प्रोग्राम जो भी हमारे पढ़ रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि ऑयल, कोकोनट, पाम ऑयल, इन सब के लिए सेपरेट स्कीम्स बनी है। अर्लियर क्या हो रहा था कि आप एक स्कीम बना रहे थे एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग कोई पर्टिकुलर क्रॉप एरिया उस पर इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने कहा कि नहीं आप इस पर पूरा हॉर्टिकल्चर ले लीजिए, फंड्स रिलीज करके, बट स्पेसिफिकली फॉर ऑयल, पाम ऑयल, नॉर्मल ऑयल, आपका सोयाबीन, आपके कोकोनट, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई स्कीम नहीं बनाई है। द फंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड और उसको फिर एक किसी भी उससे वो लोग करते होंगे कि आप इस वाले क्रॉप पे इन्वेस्ट कर दीजिए, इस पे इन्वेस्ट कर दीजिए। बट दिस टाइम द न्यू थिंग इज दैट आपके ऑयल सीड्स के लिए, फिर चाहे वो पाम ऑयल हो चाहे सोयाबीन ऑयल हो, सबके लिए सेपरेट सब स्कीम्स बनाई गई। देयर वर स्कीम्स, देन देयर वर मिशंस, देयर वर सब स्कीम्स। तो यहाँ पर आप बहुत सारे सब स्कीम्स के बारे में देख रहे हैं। दिस वाज लॉन्च्ड इन 1450. It was restructured from the centrally sponsored scheme of integrated scheme of oilseeds, oil palm, maize and oil palm area expansion. These three schemes were there. They were restructured as the National Mission on Oilseeds and Oil Palm and was launched in 2014 and 15. Strategy of this scheme includes the seed replacement ratio, the increasing irrigation coverage, intercropping of oilseeds, use of fallow lands after paddy and potato cultivation, expansion of cultivation of oil palm, increasing the availability of quality planting material, that is the seed, and reducing the maintenance cost and intercropping during the gestation period. Next slide. Objectives of this scheme. अब हम इसे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये स्कीम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। Go to the slide number 13. This is covering the whole objectives and the promotion techniques of oil palm country. The next slide shows the horticulture. The scheme for the horticulture. Mission for integrated development of horticulture, launched in 2014 and 15. It is also a centrally sponsored scheme for holistic development of
horticulture that includes spices, flowers, vegetables, fruits, cashew, cocoa, bamboo, everything. That is, we can also call them the commercial crops also. Under this scheme, for northeastern and Himalayan state, the contribution of government of India is 90% and the state is just giving the 10% of the whole funds. Under National Horticulture Mission, the fund sharing is 60 to 40. And under NHB, Coconut Development Board, Central Institute of Horticulture, Nagaland national level agencies, the contribution is 100%. Next slide. These are again the major interventions made under the scheme. Next slide. These are the objectives. As you have this PPT on your emails, you can refer it later. 17th slide, major achievements. You can look, the area is expanded, adopting organic farming, the area is given, then the nurseries, the water resources, the horticulture mechanism, everything this is given. 18th slide, horticulture mission for northeast and Himalayan states. Separate mission has been made for these states. Again, a centrally sponsored scheme, which was earlier known as Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in Northeastern States. It was during the 10th plan. In 2014-15, this scheme is under the Mission of Integrated Development of Horticulture as a sub-scheme. Next slide, 19th. It is just 20th slide. The progress of this scheme is given here. The highlighted content you can have for your reference. Then the 21st slide, Coconut Development Board, including technology mission on coconut. एक बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन I want to ask you. आपको पता है, can you name the states that are producing coconut? South states. जो अभी राज्य है, सभी में गोवा, महाराष्ट्र. How many states? ये डिफरेंट गिनती नहीं होगी, लिस्टेड गिने जा सकते हैं. वेस्ट बंगाल, Let's start. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Mumbai, the Maharashtra, right? Then to the West Bengal, Calcutta area, Odisha, उड़ीसा और हाँ. वो वही के पास किया है. तो इतने ज़्यादा स्टेट्स आपने कितने काउंट किए? 7, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे महाराष्ट्र लेकर के गोवा लेकर के 8 हो जाएंगे. इसी के साथ बैम्बू उसमें जाएगा नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड को जाता है. all 7 sisters, all 7 sisters. टी कर्नाटक, केरला, असम. कॉफी भी कर्नाटक में है, जब असम में कॉफी उधर से नहीं, चाय है उधर, क्योंकि टेम्परेचर उसके लिए वहां से नहीं करता. जस्ट कर्नाटका कॉफी. कर्नाटक में है और एक्स्ट्रा तमिलनाडु, केरला, वो तमिलनाडु, कर्नाटक और उसका जो the 3 states जो है यहाँ पूरे में कॉफी रीजन. ये क्रॉप्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि इन सब के लिए अभी बनने के लिए बाकी है. These all are commercial crops. Do you know कि बैम्बू से क्या क्या होता है? फर्नीचर एंड बैंगल्स बनती है, ज्वेलरी आजकल उसी की बन रही है, ज्वेलरी एंड पार्सेल्स बनते हैं. मैम हैंडीक्राफ्ट का तो इतना हैंडीक्राफ्ट बड़ा है. Do you know कि उससे फैब्रिक बनता है? यस मैम. ब्यूटीफुल साड़ीज आर मेड ऑफ बैम्बू. अरगंडी इसको बोलते हैं. नहीं, वो अलग बैम्बू सिल्क, इट इज कॉल्ड बैम्बू सिल्क. आपको असम में मिल जाता है. इट्स ब्यूटीफुल साड़ी, बहुत सॉफ्ट. तो ये जो कमर्शियल क्रॉप्स वी आर डिस्कसिंग, दीज आर दोज क्रॉप्स
जिनके लिए स्कीम्स अभी बनने के लिए प्रपोज हैं, जो कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड्स हैं, कुछ पेपर्स में आई जस्ट रेड देम कि इन पे वर्क हो रहा है, दे आर मीटिंग्स आर गोइंग ऑन, कि वो क्रॉप्स जो इसमें अभी प्रॉपरली नहीं कवर की गई उन पे भी वर्क हो रहा है। कोकोनट क्योंकि आप देखते हैं पूरे इंडिया में भी अच्छा खासा सप्लाई होता है। एक इसको ऐसा पेड़ कहते हैं जिसके पत्ते से लेकर इसका रेशा, इसका बीज, हर चीज पूरी तरह से यूटिलाइज होता है। यहाँ तक कि जो इसका बायो प्रोडक्ट है, जो उसका भूसी होता है, उसको आजकल हम कोकोपीट में और आपके जो मैट्रेसेस बनते हैं उन सब में बहुत जमाने से यूज होता है। तो ये ऐसा एक क्रॉप है जिसका कोई बायो प्रोडक्ट, कोई वेस्टेज नहीं। ऐसे क्रॉप को टोटली नेग्लेक्ट किया गया प्रीवियसली, बहुत कम इसके लिए फंड्स दिए गए, ध्यान नहीं दिया गया। नाउ अब उसके लिए भी साइंटिफिक टेक्निक, स्पेशली कैसे उसे कल्टीवेट करें, कैसे ज्यादा नारियल लें, प्लस उसको कैसे प्रोटेक्ट करें डिजीजेस से। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक कुछ स्लाइड्स ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं लगता हम यहाँ शेयर कर पाएंगे, टाइम नहीं है। आई विल गिव यू ऑन योर व्हाट्सएप, जिसमें आप पूरे पेस्ट के ऊपर पूरा है कि किस किस क्रॉप में कौन कौन सा पेस्ट आ रहा है, किसकी वजह से आप, और उसके लिए कौन सी न्यू मेडिसिन डेवलप की जा रही हैं, कौन सी नई टेक्निक्स बनाई गई। उसमें उसका कोकोनट का पूरा एक बड़ा पिक्चर था, किस तरह से वो अंदर ही अंदर से उसको जो पेस्ट है खराब करता है। तो इसके लिए स्पेशली प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया। अब इस पे आ रही है स्लाइड्स को जब हम लोग रीड करेंगे। फोकस वाज ऑन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। हेडक्वार्टर आपके कोच्चि केरला में है, रीजनल ऑफिसेज हैं, 6 स्टेट सेंटर्स हैं, सब हाईलाइटेड है आपके स्लाइड्स में, यू कैन सी देम। 9 demonstration cum seed production farms on different location and a market development cum information center was developed in Delhi. A board was set up, a technological development center at Eluva, Kerala. Next slide, first areas हैं इसके, slide number 23. The major programs that are being implemented by the boards, the whole list is given, you can have a look. देख लीजिए आपके पास है मोबाइल पे, आप just have a look. There are करीब कितने programs? 11, totally 11 programs are there mentioned, you can have the look. Then Central Institute of Horticulture, it was established in 2005 and 6. Next slide, progress of this scheme. Then some 28 slide. National care for cold chain development center ये बना है। cold storage के लिए? या क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोस्ट प्रोडक्शन सबसे प्रॉब्लम है, हाउ टू स्टोर देम, हाउ टू मेंटेन आवर कोल्ड स्टोरेजेस, हाउ टू मेंटेन आवर गोडाउन्स। वो इतने अनसाइंटिफिक हैं, इतने प्रिमिटिव टाइप के हैं कि काम नहीं कर पाते। इसी तरह यहाँ एक पैकेज आप देख रहे हैं, स्लाइड नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर J&K, स्पेशली उनके लिए अलग स्कीम दिया। नेक्स्ट का बी डेवलपमेंट, नेशनल बी बोर्ड बनाया था, उसका बी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्रेस उसकी आपको नेक्स्ट 32 स्लाइड में दी है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्रीडिंग ऑफ बी एंड डेयरी डेवलपमेंट। आप देख लीजिए स्लाइड्स को, 42 स्लाइड्स हैं एंड हम इसको सम अप करके वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एज डिजिटल एग्रीकल्चर, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। ये जो अभी आपने चैप्टर देखा, दिस इज अगेन द होल मटेरियल फॉर यू इफ यू वांट टू राइट अ पेपर ऑन दिस। 7 criteria we discussed yesterday. On each criteria you can have one paper easy. One research article or a review article की जो limit है, it is approximately 10 to 12 pages with figures and all. You can write a 12-page paper with this. I think more than 2,000 words. Yes. And if you are doing a research paper, it can exceed to 20 to 25 pages because tables and data is removed. Then you have to do some survey work, keeping this data with you. Okay, so we will move to next, that is digitalization of agriculture.
ट्रांसफर हो गया आपका सभी जी? यस खुद जी बोल रहा जब से सुन रही Slide open. It is digital agriculture, the future of Indian culture. The first slide gives you the latest trends of 2021. Start from the third slide. What is digital agriculture? It is an ICT and data ecosystem. It supports the development and delivery at the time. Targeted information services to make farming profitable and sustainable. Delivering safe, nutritious and affordable food. Examples दिए हैं agricultural biotechnology, precision agriculture and all above आगे आते हैं. These are the benefits, challenges. From slide 4 and sorry 5. यहाँ से आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए that we will discuss. Agri Stack. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has planned creating Agri Stack. It is a collection of technology-based intervention in agriculture to create uniform platform. Just पूरे इसको समअप करते हुए इस पूरे स्लाइड्स को मेन जो इसका सोल है वो ये है कि हमने साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ अपने एग्रीकल्चर को जोड़ा. एग्रीकल्चर के हर पॉइंट पर फ्रॉम इनिशियल इनपुट टू द सप्लाई चेन हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया. ऐसे स्कीम्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जैसे कि चौपाल, फार्मर पोर्टल, आपका ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंदर या यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म के अंडर ये सारी ओपन किए गए जिसमें आपको मशीन्स भी अवेलेबल कराई जा रही हैं. अगर आप स्लाइड्स को आगे मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ उसमें वो भी मैंने दिए हैं, कुछ मशीन्स के पिक्स भी आपको दिए हैं. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी पहले जो लार्ज फॉर्म पे यूज होती थी, जो हमारे इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती थी, प्लस हमारे पास लेस कैपिटल है, फार्मर्स हमारे पुअर हैं तो वो इतनी बड़ी मशीनरीज को हैंडल नहीं कर सकते थे, ले नहीं सकते थे. कोऑपरेटिव बैंक्स थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे पर उसमें फिर वो लोन का इशू था. कल हमने वो भी आपको समझाया था, लोन्स के लिए भी स्कीम चली. तो जो कुछ ऐसी मशीनरी जो कि स्मॉल होल्डिंग्स पे चलाई जा सके, जिनको हम प्लग एंड प्ले मशीनरी कहते हैं, यू जस्ट प्लग इन एंड जस्ट यूज इट. ऐसे छोटे मशीनरीज बनाए गए जो कि रेंटल प्लेटफॉर्म पे रखे गए. जो छोटे किसान हैं वो आप वहां से रेंट पे लेकर आप अपने स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं. रोल है ये देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. 7 पायलट स्टेट्स में इसको यूज किया गया. इनके इनिशिएटिव्स थे किसान कॉल सेंटर्स, किसान सुविधा ऐप, एग्री मार्केट ऐप एंड सॉइल हेल्थ कार्ड. वी डिस्कस द सॉइल हेल्थ कार्ड यस्टरडे. किसान कॉल सेंटर्स के बारे में भी all know and we also discussed yesterday. The way forward is quantum computing, AI is artificial intelligence, big data बैंक है जिसमें आपने ये टारगेट किया कि देश के सभी किसान सबका एक डेटाबेस होगा, उनकी लैंड होल्डिंग्स, उनके कितने पूरा डेटाबेस, क्या उगा रहे हैं, क्या उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है, पूरा डेटाबेस का एक जिसे बिग डेटा कहा गया बनाएंगे. इसके साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकेंड जो हमारा फेज चल रहा है उसको इंट्रोड्यूस किया गया अपने IT रेवोल्यूशन. Satellite imaging, soil health information, land record, cropping pattern, frequency of croppings and market data and others. साथ में डेटा एफिशिएंसी के लिए उन्होंने आपका देखिए डिजिटल टोपोग्राफी, लैंड यूज, लैंड कवर, सॉइल मैप एक्सेट्रा सबका स्कीम्स आई हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, स्मार्टफोन्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, SMS फैसिलिटीज एंड द नंबर फॉर द किसान कॉल सेंटर. ये अभी इसके लिए उन्होंने पूरा एक स्टाफ बनाया है जो कि हर गांव में वीडियो के अंदर काम करता हुआ हर विलेज में जाके
लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन देने के साथ साथ ये नंबर और कैसे आप उनको ऐप्स को इंस्टॉल करके देना, कैसे आप उन ऐप्स को यूज करें, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है। एक पूरा स्टाफ, डिमॉन्स्ट्रेशन स्टाफ करके लगाया गया जो इन सभी स्कीम्स को जाके आपके प्रॉपर, जैसे हम फील्ड्स कहते हैं, वहां जाके लोगों को सिखा रहे हैं। स्लाइड 10 पे अगर आप आते हैं, यू आर रिव्यूइंग, देखिए आपके पास एक ड्रोन है जो कि दिख रहा है इमेज में आपको, जो कि रिमोटली ऑपरेटेड है और ड्रोन पूरे उसका सर्वे करके आपको लाइव पिक्चर आपके उसकी देता है। इस तरह के ड्रोन्स किसानों को भी दिए गए हैं, जो वहाँ का एक एरिया का जो इंचार्ज बनाया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास भी हैं, जो कि खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि क्रॉप्स क्या सिचुएशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आप एक दूसरी मशीन देख रहे हैं जो कि अब क्योंकि मैं थोड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो ये क्या कर रही है मशीन, आप में से कोई है तो हमें भी बताएं। समथिंग जुताई या कुछ तो कर रही है। सेकंड नंबर की मशीन आप देखिए, जो काम पहले शायद काफी टाइम्स में होता होगा वो बहुत स्पीड पे हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, ड्रोन जैसी एक मशीन है जो कि स्प्रिंकलिंग कर रही है ऑफ वाटर एंड इसी के थ्रू आप पेस्टिसाइड्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि काम बहुत कम समय में और बहुत परफेक्शन से हो रहा है, प्रॉपरली एक एक क्रॉप को ध्यान दिया जा रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एग्जांपल आपने देख लिया। आप कई जगहों पर एक चीज देखेंगे, दैट इज IoT, आपको शॉर्ट फॉर्म में इन रिपोर्ट्स में मिलेगी। जब आप इन रिपोर्ट्स को मेरे साइट के थ्रू जब मैं आपको दूंगी, उनमें आप जाएंगे तो आपको AINLOT मिलेगा, ऐसा लगेगा, दैट इज LOT, दैट इज IoT। उसी का मैंने इसलिए लार्ज फॉर्म दे दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये लोग सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, आपका ई चौपाल, ई पोर्टल, आपका ई मार्केट, सभी, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही हब में मिल रही है। कस्टमाइजेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ वेब्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन 5 स्टेट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आप आएंगे तो आपको पूरा इसी का डिटेल हम दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिपोर्ट के साथ सुविधा के थ्रू आपको क्या मिलता है। ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द वेदर, अबाउट द मार्केट प्राइस एंड एवरीथिंग। व्हाट इज इट? ओके, हम लोग रिसर्च पेपर एक लेके आएंगे आपके लिए, इसको आप देख लीजिए जल्दी से। आपके स्लाइड्स 12 स्लाइड्स 13 डिजिटल टेक्नोलॉजीज में अभी हमने ये डिस्कस किया। हाँ, ये बताना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5 MOU साइन किए हैं विद प्राइवेट सेक्टर। आपके स्क्रीन पे हैं 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्राइवेट सेक्टर्स, Cisco, NinjaCard, Jio Platforms Limited, ITC Limited, and NCDX E-Market Limited. These were all under the Digital Agriculture Mission 2021-25. Next slide number 14 में आप देखेंगे what Cisco has developed an agriculture digital infrastructure ADI in 2019 to enhance the farming and knowledge sharing. It has developed a data pool that will be created by the Department of Agriculture under the National Agri Stack. The pilot project is launched in Haryana and Madhya Pradesh. The Geo Agri Geo Krishi platform is to provide advisory, feed the data into artificial intelligence and machine learning. This AI and ML, these words you will find in every report. This ML is machine learning, mechanical learning. Okay. Then personalized advice. This is initiated in Maharashtra, Nashik and Jalna. ITC का फुल फॉर्म आपको पता है? किसका? ITC। Anybody deals in share market. These shares are going very high, ITC shares. You will be surprised. चलिए होमवर्क है, ढूंढ के लगेगा। Next हाँ, ITC has proposed to create a personalized site-specific crop advisory, crop monitoring platform hosted by eChopal,
4.0 digital platform in Madhya Pradesh. So we are just closing this also. आप देख लीजिएगा, आपको ये डेटा तो हमने सारा प्रोवाइड किया है, ठीक। We will stop this lecture. Any query? Digital assistant? इंडियन टमाटो कंपनी है मैम। साइन क्या चाहिए मांगे की